Hello kids, we are starting with a new book today, which is Mathematics 1. First, we have given some learning objectives. At the end of this lesson, students will be able to enumerate and read numbers up to 100. So, इस chapter के end तक जो children हैं वो सीख पाएंगे कैसे numbers को count करते हैं और उनको कैसे पहचानते हैं. Okay. Identify what comes before, after and in between the numbers. And इस chapter से हम ये भी समझेंगे कि किसी particular number से before में यानी कि पहले में, एक after में यानी कि बाद में, and in between, दो numbers के in between यानी कि बीच में कौन सा number आता है. Okay? Then organize numbers in ascending and descending order. इस chapter में हम ascending और descending order में numbers को arrange करना भी learn करेंगे. Okay kids? Now warm up. Find out which group has more objects and which has less. Write M for more and L for less. So कौन से group में ज़्यादा objects हैं, things हैं? More के लिए हमें M write करना है, less के लिए हमें L write करना है. So हम देखकर ही identify कर लेते हैं, right? So here you can see we have dogs in this category also. Okay. So we'll count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. There are 10 dogs, okay? And here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dogs. So obviously by comparing both these groups, this group A has more. So M. And the group B है इसमें कम है. Okay, so L, less. Now this one. You can see the picture for group A. This is the picture. For group B, this is the picture. By seeing the picture, हमें पता चल रहा है कि जो group B है, it has more bats. Okay, so M. And group A has less, so L. Then in this part, notebooks are given. Okay, so group A has this much notebooks. And group B has this much. So group A में obviously ज़्यादा है, so M. Whereas group B में कम है, less है, so L. Now count the number of objects and write their answer in the circle. So जितने भी objects है उनको count करना है and number write करना है circle में, okay? So in the first picture, balloons are given and we'll count together 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So 12, 1 and 2 makes 12, okay? Now this one, in this picture there are ice creams given, right? So we'll count together 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 cones are given, okay? 2, 5, 25. Now, in this one, Rubik's cubes are given. Okay, इनको भी count करते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 and 31. 31, 31. And in the end, there is a cartoon character given. Okay, so इनको count कर लेते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 is the answer. Then in this picture, monkeys are given. So you need to count it by yourself, okay? Then in this one, burgers are given. You need to count it by yourself and you have to write that number, okay? Then in this picture, cake are given, okay? So again, you need to count it by yourself and you have to write it. Write the number here by yourself. And a toy aeroplane is given, okay? You need to count it and here you need to write the number. Okay kids, the remaining 4 pictures you have to do that work by yourself. Okay kids? Next we have watch and count. Look at the pictures given below and count the number of objects. So यहाँ पर pictures हमें given हैं, okay, and हमें number of objects को count करना है. So सबसे पहले fishes.
काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 fishes, so we'll write 8 here. Got it? Now frogs. How many frogs are there? We'll count 1 2 3 4 5 6 frogs are there. Okay, then there is a picture of swing is given. Okay, अब swing को count करते हैं 1 2 3 4. Okay, then birds. How many birds are there? We'll count from here 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. So 10 is the answer. Okay, you have to write within the box only. Okay, within the pattern, this pattern given. Now this person, watchman. Okay, so there is only one watchman, so 1 is the answer. Okay, then lion. Is there any lion in this picture? No. So if there is nothing, we'll write 0. अगर कुछ भी नहीं होता तो 0 write करते हैं, so 0. Then boys. How many boys are there? This one, 1 and 2. 2 boys are there. Okay. Then butterflies. How many butterflies are there? 1 2 3 4 5. 5 butterflies. Then duck. How many ducks are there? 1 and 2. Only 2. And ice cream cones. 1 2. 2 ice cream cones. Okay. We are done with this activity. Okay kids. Further questions करते हैं. Then 1 to 50 counting forward. Forward counting है. Okay. Fill in the missing numbers. Numbers fill करते हैं जो missed हैं. Okay. Facts to know. In ancient Greeks, 1 is not even considered as a number. Instead, the number system began at 2. तो ancient Greek system में 1 को number consider ही नहीं किया जाता था. वहाँ पर जो number system begin करता था वो 2 से begin करता था. Okay kids. Now यहाँ पर 1 after 2, 3, 4, 5, then 6, 7, 8, 9 is already given, 10, 11, 12, 13, afterwards 14, 15, 16, this is 17, then 18, and 19, then afterwards 20, 21, 22, 23, 24, 25 is already written, then 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 is already written, then 33, 34, 35, then 36, 37, 38, 39, then 40, 41, 42, 43 is already written, then 44, 45, 46, 47, 48, 49 and 50. So we are done with this. Now 100 to 51 counting backward. A backward counting है. Means 100, then 99, 98 like this. Okay, forward is 1, 2, 3, 4 like in a increasing order. When we talk about backward, it means in a decreasing order. Okay, means number छोटा होता जाएगा. Okay, fill in the missing numbers. Fill करते हैं. Now 100, then 99, 98, 97, 96, 95,
94, 93 is already written, then 92, 91, 90, 89 is already written, then 88, then 87, then 86, 85, 84, 83, 82, 81, okay, and 80 is already written, then 79, 78, 77, then 76, 75, 74, 73, and 72 is already written, then 71, 70, 69, then 68, then 67, after that 66, then 65, after that 64, then 63 is already written, okay, then 62, 61, then 60, then 59, 58, 57 is already written, then 56, 55, 54, 53, 52, in the end 51. Okay, so we are done with this as well. Now ascending order, arrange the following numbers in ascending increasing order. So अगर ऐसा ऑर्डर होता है जिसमें नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, यानी कि ग्रेटर होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, उस ऑर्डर को हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं. लाइक नंबर्स आर गिवन, ओके, आई जस्ट रीड दीज नंबर्स 2, 86, 60, 100, 90, 142, 73 एंड 22. दीज ऑल आर दी नंबर्स. अब इन नंबर्स को हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. ओके, सो सबसे पहले द स्मॉलेस्ट वन वी हैव टू फाइंड, विच इज 2. Then after that, which is greater, इसके बाद जो इससे बड़ा है, that is 22. Okay, so 22 राइट करते हैं, and 22 से अब नेक्स्ट ग्रेटर कौन सा है जो हमें यहाँ पर दिख पा रहा है, that is 42. So 42 राइट करेंगे then. Okay, then 42 के बाद इससे कौन सा बड़ा है जो इसके नियरेस्ट भी हो और इससे बड़ा भी हो, that is 60. Okay, so 60 राइट करते हैं. Okay, then after that 60 से greater one and nearer one, so 73, then 73 से greater, that is 86, then 86 के afterwards 91, and in the end the greatest one जो सब में से सबसे बड़ा है, that is 100. So this is how we arrange the numbers in ascending order. सबसे पहले smallest, then greater one, greater one, greater one, greater one, like this, and in the end greatest one. Okay kids? Then again we have given some numbers: 70, 82, 56, 29, 11, 90, 9 and 20. Okay, now first we have to find the smallest number, which is 9. Okay, I'll just write it here, 9. Then next number is which is greater than this and closer to this, so 11. Then after 11, which is 20. Okay, then after this 29. Then after 29, 56. After 56 we have 70. And after that we have 82, and in the end the greatest one is 90. Okay kids? Then here you can see some more numbers are given. Okay, and similarly we have to arrange these numbers in ascending order, like I already told you in the two previous questions. Okay, 22, 66, 55, 44, 99, 0, 33 and 11. You have to do this question by yourself. I'll just give you a little hint. Like the smallest number here is 0. Okay, 0 is the smallest number here. 0 से begin करेंगे. And the greatest number here is
99. This was the hint, and now you have to do this as practice. Okay, kids? Now, teacher's note, ascending order means going from smaller number to bigger number. Arrange the children according to their height in a line to emphasize the concept. तो ascending order ऐसा होता है, यानी कि हम स्मॉलर नंबर से बिगर नंबर की तरफ मूव करते हैं. तो एक एक्टिविटी करने के लिए कहा गया है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको हाइट वाइज अरेंज करना है ताकि हम कॉन्सेप्ट को क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकें. ओके किड्स? Then next is descending order. Arrange the following numbers in descending, decreasing order. तो अब इन नंबर्स को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. सो डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर आता है, देन स्मॉलर 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 एंड इन द एंड स्मॉलेस्ट वन. ओके, सो यहाँ पर हम बिगर नंबर से स्मॉलर नंबर की तरफ मूव करते हैं. दैट इज कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर. ओके, नाउ यहाँ पर हमें नंबर्स गिवन है एंड हमें अरेंज करना है. ओके, सो 86, 80, 56, 23, 48, 65, 34 and 99. So from here the greatest number is 99. राइट करता है 99. Then 99 से जो छोटा है और नियरर है उसके. Okay, so we have to find out that number which is 86. So 86 राइट करते हैं here. Then आफ्टर दैट 86 से छोटा नंबर कौन सा है? 80. देन 80 से कौन सा छोटा नंबर है? 65. 65 से छोटा नंबर कौन सा है? 56. 56 से छोटा नंबर कौन सा है? 48. एंड 48 से छोटा नंबर कौन सा है? 34. एंड इन द एंड सबसे स्मॉलेस्ट नंबर विच इज 23. So that's how we do these types of questions. Okay, kids? Then some more numbers are given. We have to arrange them in a similar manner, means in a descending order. Okay? 19, 5, 26, 55, 41, 83, 73 and 2. Okay? So सबसे greatest number यहाँ पर है 83. Then 83 से छोटा 73. And 73 से छोटा 55. ओके, एंड 55 से छोटा नंबर होगा 41. देन 41 से छोटा नंबर मिलेगा हमें 26. 26 से छोटा नंबर मिलेगा 19. 19 से छोटा नंबर है 5. एंड द स्मॉलेस्ट वन इन दिस होल ग्रुप इज 2. So like this, we are done. Okay. Then this question given, again we have to arrange this also in a descending order. Numbers given are 20, 70, 100, 10, 40, 30, 60 and 50. So you have to do this part by yourself. Okay. I'll just give you a little hint. The greatest number here is 100 and the smallest one is 10. दिस इज क्वाइट ईजी. इसको बहुत ईजीली हो जाएगा. हमें बिगिन करना है ग्रेटेस्ट नंबर से एंड एंड करना है सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से. ओके किड्स, यू हैव टू डू दिस बाय योरसेल्फ. नाउ क्विक टिप, ऑलवेज स्टार्ट विद द लार्जेस्ट नंबर. हमेशा हमें जब डिसेंडिंग ऑर्डर को अरेंज करते हैं तो हमें लार्जेस्ट नंबर से बिगिन करना चाहिए. देन ऑलवेज इंश्योर दैट द नंबर्स आर इन ऑर्डर फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट. ऑलवेज एंड विद द स्मॉलेस्ट नंबर. तो हमेशा इंश्योर करना चाहिए जो नंबर्स हैं वो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट एक सीक्वेंस में है एंड हमेशा एंड होते हैं स्मॉलेस्ट नंबर के साथ. ये इंश्योर करना चाहिए. ओके किड्स? जस्ट बिफोर, जस्ट आफ्टर, इन बिटवीन. सो जस्ट बिफोर मीन्स जो भी पर्टिकुलर नंबर गिवन है उससे एक नंबर पहले. ओके, जस्ट आफ्टर मीन्स वो जो पर्टिकुलर नंबर गिवन है उसके बाद, यानी कि उससे एक नंबर बड़ा. इन बिटवीन मीन्स कि दो नंबर दिए हुए हैं उनके बीच में कौन सा नंबर आएगा. ओके, क्वेश्चंस करते हैं. जैसे एग्जाम्पल दिया है 49. 49 से पहले क्या आया? 48. उससे एक कम. सो दिस इज जस्ट बिफोर. नाउ 90 से पहले क्या आता है? 89. देन 53 से पहले क्या आता है? 52.
29 से पहले क्या आता है? 28. उससे बस एक छोटा नंबर. ओके. देन 86 से पहले 85. 42 से पहले 41. 99 से पहले 98. 81 से पहले 80. 60 से पहले 59. 98 से पहले 97. So we are done with this. Now just after. Example given है 51 के बाद next आता है 52. उससे just एक नंबर बड़ा. Okay. So 22 के बाद 23. 59 के बाद 60. 11 के बाद 12. 26 के बाद 27. 9 के बाद 10. 90 के बाद 91. 84 के बाद 85. 23 के बाद 24. 54 के बाद 55. Then next is in between. So example given है 63 and 65 के बीच में कौन सा नंबर आता है? 64. So we have to count 63, 64, 65 like this. Okay. Now 90 and 92. 90, 91 and 92. Okay. Then 86 and 88. 86, 87, 88. Like this we have to count. Then we'll get to know the answer. Okay. Then 22 and 24. So 22, 23, 24. Then 11 and 13. So 11, 12, 13. Okay. 98, 100. So 98, 99, 100. Then 88 and 90. So 88, 89, 90. Then 29, 31. So 29, 30, 31. Then 55, 57. So 55, 56, 57. Then 42 and 44. 42, 43, 44. Okay, we are done with this. Think wisely. Join the number dots from 21 to 29 in sequence and complete the picture. So हमें यहाँ पर 21 से लेकर 29 तक जो dots given हैं उनको join करना है and picture को complete करना है. Okay kids? Starting from 21, join the dots in ascending order. हमें ascending order में यानी कि increasing order में सबसे पहले smallest, then उससे greater, greater, greater and the greatest. Like this we have to join. तो यहाँ पर सबसे पहले 21 given है, okay? And 22 next होगा. So एक line make कर दी. You can use ruler also to make a line, okay? Then 22 के बाद 23. Then 23 के बाद 24. 24 के बाद 25, 25 के बाद 26, ओके. देन 26 के बाद 27, 27 के बाद 28, 28 के बाद 29. ओके, अब जो रिमेनिंग लाइंस बची है इनको भी ज्वाइन कर देते हैं because we have to complete this picture. Okay, now they are asking what is it? ये क्या बना है? This is a picture of a house. Okay, we'll write house. Okay kids, now mental maths. First circle the largest number. हमें सबसे largest number को circle करना है. So A 20, 14, 7, 9. Answer is 20. 20 is the largest number. Okay, यानी कि सबसे बड़ा 20. B 5, 7, 10, 13. Answer is 13. 13 सबसे largest number है. Okay. Now second, write the number that comes in between. So numbers write करने हैं जो in between आते हैं. Okay. A 98, 100. So 98, 99, 100. This is how we do this question. Okay. This is the easiest way to do this question. Then B 14 and 16. So 14, 15, 16. Okay. Then C
5 and 7. 5, 6, 7. Then D, 83, 85. So 83, 84, 85. Okay. Then similarly, we have given other two parts, E, 18 and 20. So you have to do this question by yourself. Then F, 57, 59. Again, you have to do these two parts by yourself. Okay, kids? Then question 3, how many 5s are there in the box? So we have to count how many 5s are there. Okay, we'll count together. First, I'll just read these numbers. Okay, 2, 3, 5, 1, 5, 3, 4, 5, 5, 6, 2, 5. So 5 is this one. 1, then 2, 3, 4, 5. There are 5 5s in this box. Okay, we'll write answer here. Maths lab activity, materials required, number cards from 21 to 30 and sheets of paper. So number cards चाहिए material में, 21 से 30 तक number cards होने चाहिए and sheet चाहिए, okay, paper की. Then steps, first divide the class into 2 teams. Class को divide करेंगे 2 teams में. Then second, keep the material on your table. जो material है अपने table पर put करना है. Then third, a student from team 1 chooses a number card. जो student होगा team 1 से वो एक number card choose करेगा. Then fourth, the student reads out that number to the other students of team 2, for example 22. अब जो student है वो read out करेगा एक number को other student को, okay, जैसे यहाँ पर read out किया 22, okay. Now fifth, now team 2 students will have to draw 22 butterflies on a sheet of paper and show it to his/her team members. Now अब जो team 2 का student है वो क्या करेगा, 22 butterflies को draw करेगा या show करेगा एक sheet of paper पर अपने team members को. Okay, then 6 team members will count and tell the number if the answer comes out correct. Then 1 point will be given, otherwise points will be given to team 1. तो अगर जो टीम मेंबर्स है टीम 2 के वो पहचान लेते हैं काउंट करके कि कितना नंबर है, करेक्ट नंबर गेस करते हैं तो उन्हें 1 पॉइंट मिल जाएगा. बट अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो 1 पॉइंट मिलेगा टीम 1 को. ओके, गॉट दिस एक्टिविटी? So these are the number cards from 21 to 30. Okay, and these are the butterflies you have to draw. They have given example like this. Okay, you have to do this activity in your class with your classmates with the help of your teacher. Okay, kids? So I hope kids you enjoy learning with me. We'll meet in the next class. Bye-bye.